नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VSB ब्लूप्रिंट में। यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, यह उन लाखों स्टूडेंट का परिवार है जो अपने सपनों को मेहनत, अनुशासन और सही रणनीति से पूरा करना चाहते हैं। मैं हूँ विश्वराज, तैयारी अपने घर और अपने गांव से कर रहा हूँ। मैं कोई टॉपर बनकर आपको नहीं पढ़ा रहा, मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ। यहाँ हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, हम डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और सक्सेस की आदतें बनाते हैं। अगर आप भी अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप सही जगह पर आए। चलिए आज का स्टडी सेशन शुरू करते हैं। हम गांव से आए हैं, सबको आगे तक साथ लेकर जाएंगे। जय सिया राम, बोल सिया रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की माँ महादेव की जय। सब साधु संतन की जय। माता पिता की जय। जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन कुरु सुधारि। बरन रघुवर विमल, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार मत के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केस। हाथ वज्र ध्वजा बिराजे, कांधे मंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुमरो यस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीलोताई मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माई, जलधि लांघि गए अजरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, स्म अनुग्रह तुम रेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोग हांक से काप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना।
नासे रोग हरे सब पीरा, जपन निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जोला। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हार, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, सुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सबर दीन जानकी मात। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमंत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महा सुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि सा कि गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। Chapter number 5, or pressure. What is meant by earth pressure? The meaning of earth pressure is the pressure exerted by a soil mass in a horizontal direction, and it is vary linearly with the depth. The coefficient of earth pressure is denoted by capital K. Capital K is equal to sigma h upon sigma v. The expression for vertical stress is generally expressed by sigma v is equal to gamma h. Generally, the expression for the earth pressure is small p is equal to sigma h is equal to k into gamma v. Therefore, final formula is p is equal to k gamma h. Pressure intensity and the total pressure is
The pressure intensity and the total pressure is calculated by the following approach. Top H is capital H. The pressure intensity kilonewton per meter square. Pressure intensity kilonewton per meter square is calculated by pressure intensity calculated at ground level, means top level. Small p top is equal to K into gamma H. K into gamma into H is equal to 0, and P bottom is equal to K into gamma into H, and this H is height is below the ground, that means capital H. Then formula becomes K into gamma into capital H. So pressure intensity kilonewton per meter स्क्वेअर मध्ये मोजली जाते. जर पी टॉपचा जर काढायचं असेल तर पी टॉप इज इक्वल टू स्मॉल एच मीन्स हाईट 0 असेल. त्याचा फॉर्म्युला पी टॉपचा के इंटू गॅमा इंटू एच. के माहीत आहे, गॅमा माहीत आहे, पण एच 0 आहे तर पी टॉप झाला 0. पी बॉटम जर काढायचा आहे तर पी बॉटम इज इक्वल टू K into gamma into small h, but small h height is below the ground, that means capital H. Then capital H is equal to something value, then formula become K bottom is equal to K into gamma into capital H. Okay. टोटल प्रेशर किंवा टोटल फोर्स पर मीटर लेंथवर जर काढायचा असन, टोटल प्रेशर किंवा टोटल फोर्स किलोन्यूटन मध्ये पर मीटर लेंथला, पर मीटर लेंथसाठी जर काढायचं असेल तर P is equal to the area of earth pressure P is equal to area of earth pressure distribution diagram. Capital P is equal to earth pressure distribution diagram असते ट्रायंगुलर. त्याची हाईट आहे कॅपिटल एच. तसा CG असते h/3. जसं बेसची व्हॅल्यू असते गॅमा के इंटू गॅमा इंटू एच. आणि प्रेशर इंटेन्सिटी टोटल प्रेशर किंवा फोर्स टोटल फोर्स एफ जर काढायचा असेल तर अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम वरून ट्रायंगलचा फॉर्म्युला वापरायचा. पी हाफ इंटू बेस इंटू हाईट इंटू बेस इंटू हाईट. हाफ इंटू बेस आहे के गॅमा कॅपिटल एच इंटू ट्रायंगलची हाईट आहे कॅपिटल एच. तर आपलं झालं के गॅमा एच स्क्वेअर बाय 2 किलोन्यूटन पर मीटर. हा झाला फोर्स. टोटल फोर्स किंवा टोटल प्रेशर जर काढायचं असेल तर काय झाला के गॅमा एच स्क्वेअर बाय 2 किलोन्यूटन पर मीटर. के गॅमा एच स्क्वेअर बाय 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. पी और एफ. एरिया अँड CG ऑफ सम बेसिक्स फिगर आज आपल्याला
रेक्टँगलचा एरिया असते बेस इंटू हाईट. बेस इंटू हाईट त्याचा CG असते h/2 or b/2 वर. आणि फोर्स F रिॲक्ट होतो CG वर. तर फोर्स म्हणजेच x ची व्हॅल्यू आहे h/2. एरिया असते b इंटू h. कपासाचा एरिया फॉर्म्युला a+b/2 इंटू capital H x CG from base. CG from base 2a+b upon a+b into h/3 or CG from टॉप जर वाढायचा असेल तर 2b plus a plus b into h/3. रेक्टँगलचा एरिया CG आहे h/2, ट्रायंगलचा h/3 आणि CGचा पण h/3. जर CG काढायचा असेल बेसवरून त्याचा फॉर्म्युला आहे 2a+b upon a+b होल ब्रॅकेट इंटू h/3. जर CG फ्रॉम टॉप काढायचा असेल तर a+2b upon a+b होल ब्रॅकेट कंप्लीट इंटू h/3. दोन फॉर्म्युला. The concept of finding the resultant means total force and its location for irregular pressure diagram. Irregular pressure diagram. Divide the total pressure diagram in a such a way that the area and the CG of each part can be calculated.
Calculate the total force and its location for the diagram of part A1. हे रेग्युलरचे दोन भाग पाडायचे. एक ट्रॅपेझॉइडल तयार करायचा, एक ट्रायंगल तयार करायचा. एक ट्रॅपेझॉइडल सोडवायचा आणि एक ट्रायंगल सोडवायचा. Calculate the total force for part A1. part A1 चा जर हाईट एच 3 मीटर दिली आहे, h/3 1 मीटर झाला. फोर्स F1, पार्ट 2 साठी F2 आणि टोटल फोर्स F. F1 चा एरिया ऑफ पार्ट A1 मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू हाईट. बेस आहे 40 गिवन, हाईट दिली आहे 3, तर 60 झाला. 60 किलो न्यूटन F1 आला. F1 acting at 5 meter plus 3/3 means 6 meter वर ऍक्ट होऊन राहिला from the base. That means x1 हा बेस पासून म्हणजे खालच्या 6 मीटर. F2 एरिया ऑफ पार्ट 2 काढायचा आहे. F2 काढायचा आहे तर आपल्याला बेस पासून जर का एरिया ऑफ पार्ट 2 resultant force means x bar. That is a formula F1 x1 plus F2 x2 by F, total F, resultant force. x1 f1 x2 f2 x bar capital F. Summation of moment due to each force is equal to the summation moment due to resultant force. Summation of moment due to each force म्हणजे f1 x1 plus f2 x2 plus f1 x1 is equal to काय म्हटलं आहे, द मोमेंट ड्यू टू रिझल्टंट फोर्स.
म्हणजे कॅपिटल एफ इंटू एक्स बार. तर एक्स बारचा फॉर्म्युला झाला आपल्याला काढायचा आहे लोकेशन ऑफ रिझल्टंट फोर्स जर काढायचा एक्स बार तर मग F1 प्लस F2 डिवायडेड बाय कॅपिटल एफ रिझल्टंट फोर्स झाला लोकेशन ऑफ रिझल्टंट फोर्सचा फॉर्म्युला. तर के वॉटर आहे 1 गॅमा सॅट इज इक्वल टू सॉइल प्लस वॉटर. गॅमा सबमर्ज म्हणजे गॅमा सॅट मायनस गॅमा वॉटर काढून टाकायचं. Effort of water table in a pressure calculation. In a water pressure in all direction is same and hence K for water is 1. Hence K for water is 1. K is equal to gamma H upon gamma V. Stress in horizontal direction upon stress in a vertical direction is equal to 1 for water, because in water all the direction water pressure in all the direction is same. While calculating the pressure intensity capital P, the effect of water table should be considered separately, and for soil use submerged density and not saturated density. For example, find pressure at 5 meter depth means capital H is equal to 5 meter. Ground level gamma sat is equal to 21 kilonewton and K soil given है. K soil given है 0.4. K is equal to K gamma H. गॅमा सॅच्युरेटेड जर गिवन असेल तर प्रेशर म्हणजे सॉइल प्लस वॉटर आहे. मग आपल्याला पी काढायच्या वेळेस गॅमा पहिले सॉइलसाठी वापरायचं म्हणजेच तो गॅमा डॅश झाला आणि गॅमा फॉर वॉटर म्हणजे गॅमा डब्ल्यू झाला. तर मग दोन फॉर्म्युला तयार होईल. पी इज इक्वल टू के गॅमा एचचा फॉर्म्युला रिन्यू होऊन कसा होईल तर के गॅमा डॅश एच फॉर सॉइल प्लस के गॅमा डब्ल्यू एच फॉर वॉटर बरोबर. तर 0.4 के फॉर सॉइल गिवन आहे. गॅमा डॅश 10 kilonewton per meter cube. उरला एक आणि 5 प्लस 1 into 3 into 5. It releases 102 kilonewton per meter square. गॅमा डब्ल्यू ची व्हॅल्यू 9.81 kilonewton per meter cube बाबू. तर तिला राऊंड अप करून 10 घेतली जाते. मग 21 दिली आहे गॅमा सॅटची व्हॅल्यू. तर मग गॅमा
डॅश म्हणजे गॅमा सॉईल किती राहिला, गॅमा सॅच्युरेट पैकी 21 मधून 10 गेले 11, 11 किलोमीटर पर मीटर क्यूब राहिला गॅमा डॅश म्हणजे गॅमा सॅट. टोटल दिले 7 मीटर, गॅमा ड्राय दिला आहे 16, त्याचा क्यू दिला आहे 0.3 म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ प्रेशर 0.3 दिला आहे. हाईट 3 मीटरपर्यंतच्या खाली आहे. गॅमा सॅट 19.2 किलोमीटर न्यूटन पर मीटर क्यूब. गॅमा सॅटची व्हॅल्यू म्हणजे गॅमा डॅश फॉर सॉईलची व्हॅल्यू होईल 19.2 मायनस वॉटरची व्हॅल्यू 10 मायनस केली का 9.2, गॅमा डॅशची व्हॅल्यू झाली ती 0 वरती दिला आहे. आता आपल्याला सोडवायचं आहे हे. तर पहिले पी टॉपचं के गॅमा एच ची व्हॅल्यू तर 0च राहील ग्राउंड लेवलवर. मग पी ॲट बी पॉईंट काढायचा आहे म्हणते. पी ॲट बीची व्हॅल्यू येईल 3 मीटर. मग के गॅमा एच. आता याच्यात सॉईल आली, वॉटर तर नाहीच आहे. गॅमा 3 मीटरपर्यंत कोरडीच आहे म्हणते. मग के फॉर सॉईल, गॅमा डी दिला आहे, एच दिला. सोडवा. गॅमा फॉर सॉईल दिला आहे 0.3, गॅमा डॅश दिला आहे 16 आणि हाईट दिली आहे 3. into 16 into 3, 14.4 kilonewton per meter square. Pressure at B point. Pressure at A is equal to 0. Pressure at C point काढायचा आहे. K into gamma into small h हा नॉर्मल फॉर्म्युला. आता K गॅमा दिला आहे गॅमा सॅच्युरेटेड. मग पहिले के गॅमा डॅश एच फॉर सॉईल वापरून घ्या आणि के गॅमा डब्ल्यू एच फॉर नंतर वॉटर वापरून घ्या. के 0.3 दिला आहे सर्वासाठी. गॅमा डॅशची व्हॅल्यू काढली आपण मग 9.2. एचची व्हॅल्यू आहे 4 मीटर. आता इथं दोन्ही घ्यावं लागते. एक तर वरची घ्यावं लागते 16ची 3 मीटर प्लस 0.3 इंटू 9 वाली घ्यावं लागते 4 मीटर आहे. आणि मग घ्यावं लागते वॉटर. वॉटरसाठी के गेन प्रेशर आहे 1. ओके. for 5.2 kilonewton per meter square.
मैटर क्यों बनते हो? तो खाएगा समझे नसतं अर्ध. बस थोड़ा और दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने अभी अभी 25 मिनट का स्टडी सेशन पूरा किया है तो खुद को एक छोटी सी शाबाशी दीजिए। बहुत लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में ही हार मान जाते हैं और आप अभी भी यहाँ है। इसका मतलब है कि आप अपने सपनों को लेकर सीरियस हैं। जानते हो, गवर्नमेंट एग्जाम सिर्फ किताबों का खेल नहीं है, ये मानसिक ताकत का खेल है। जिस दिन आपका मन पढ़ने का नहीं करेगा उस दिन पढ़ लेना, वही एक आपकी सिलेक्शन के सबसे करीब लेकर जाएगा। मैं भी आपकी तरह ही हूँ। मैं भी किसी बड़े शहर में नहीं रहता, मेरे पास भी कोई लग्जरी कोचिंग नहीं है। मैं भी अपने घर से पढ़ाई कर रहा हूँ। कभी मोटिवेशन होता है, कभी बिल्कुल नहीं होता। लेकिन एक बात मैंने समझी है, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन सिलेक्शन दिलाता है। आप जो पेज पढ़ रहे हो सकता है उसका रिजल्ट आज ना दिखे, लेकिन यही पेज, यही नोट्स, यही रिवीजन कुछ महीने बाद आपकी रैंक बनेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, जब दूसरे लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होंगे,
जब दूसरे लोग बिना वजह टाइम पास कर रहे होंगे तब आप अपने भविष्य को बना रहे होंगे। और यही फर्क एक कैंडिडेट और एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के बीच होता है। अगर कभी लगे कि यार मुझसे नहीं होगा, तो एक काम करना, अपने माता पिता का चेहरा याद करना, उनके संघर्ष याद करना कि अपने ये जर्नी शुरू क्यों की थी। क्योंकि जिस इंसान के पास कारण मजबूत होता है वो कोई भी कठिन रास्ता पार कर सकता। मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पर हम सिर्फ व्यूअर्स बनकर ना रहे, हम एक फैमिली बनी जहाँ कोई किसी से कंपटीशन नहीं करेगा, बल्कि सब एक दूसरे को ऊपर लेके जाएंगे। अगर आप गांव से हो तो कमेंट में लिखो गांव से हो लेकिन सपना बड़ा है। अगर शहर से हो तो लिखो मेहनत मेरी पहचान है। मैं सच में आपके कमेंट पढ़ता हूँ और जितना हो सके रिप्लाई भी करता हूँ। अब 5 मिनट का ब्रेक लगभग पूरा होने वाला है। पानी पी लीजिए, थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए, आंखों को आराम दीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि अगले सेशन में मैं अपना बेस्ट दूंगा। याद रखिए, स्मार्ट वर्क दिशा देता है, हार्ड वर्क मंजिल तक पहुंचाता है और कंसिस्टेंसी सपनों को हकीकत बनाती है। हम गांव से आते हैं लेकिन सफलता की मंजिल तक सबको साथ लेकर जाएंगे। चलो दोस्तों, नेक्स्ट पोमोडोरो सेशन बिगिंस नाउ। Effect of surcharge load in earth pressure calculation. सरचार्ज लोडचा इफेक्ट काय होतो अर्थ प्रेशर कॅल्क्युलेशन करताना आपल्याला शिकायचं आहे. Surcharge load is indicated by small q in kilonewton per meter square, and the term q represent vertical stress, and the effect of small q remains same at any depth below the ground level. Find pressure intensity at top and bottom of vertical wall. वर काढायची pressure intensity Q ची. Q दिला आहे Q 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वेअरला लागतं. वॉल दिली आहे 4 मीटर टेपची. गॅमा दिला 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर दिला आहे 0.53. त्याचा आपल्याला काढायचा आहे प्रेशर इंटेन्सिटी. पी काढायचा आहे. पी ॲट टॉप जर काढायला गेलो तर एच स्मॉल एच राईज दिलं होतं के गॅमा स्मॉल एच. फॉर्म्युला आहे, पण आता हा फॉर्म्युला म्हणजेच काय झालं के इंटू गॅमा व्ही म्हणजेच काय आहे गॅमा एच गॅमा इंटू एच आहे. तर के इंटू गॅमा व्ही झालं आणि गॅमा व्हीच म्हणजे काय झालं के इंटू क्यू प्लस गॅमा एच. सरचार्ज लोड जर गिवन असेल तर प्रेशरचा फॉर्म्युला आहे के इंटू क्यू प्लस गॅमा इंटू एच. सरळ वापरायचा, लोड काही घ्यायचं नाही. 0.53 गिवन आहे, के गिवन आहे 10, गॅमा आहे हे 22 इंटू 0 आणि याचं उत्तर येते 5.3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. आता प्रेशर ॲट बॉटम काढायचा आहे, हे काढा टॉप. के इंटू गॅमा व्हीचा वापर करायचा, के इंटू
in bracket Q plus gamma into H as a formula. 0.53 आपल्याला गिवन आहे. Q दिलेला आहे 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वेअर, गॅमा दिलेला आहे 22 आणि पूर्ण डेप्थ आहे H इज इक्वल टू 4 मीटर. त्याचे व्हॅल्यू होती 1.94 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. आता काढायचा आहे रिझल्टंट. आता काढायचा आहे F म्हणजे एरिया ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम. याला ट्रॅपेझॉइडल तर याचा असते A प्लस बी बाय 2 इंटू याचा फॉर्म्युला. तर ए आहे 5.3, बी आहे 51.94 भागेला 2 इंटू 4. त्याचे उत्तर येते 114.48 किलोन्यूटन. आता सी जी फ्रॉम बॉटम काढायचा असला तर त्याचा फॉर्म्युला आहे 2a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी फॉर ट्रॅपेझॉइडल इंटू एच. तर 2 इंटू 5.3 प्लस बी 51.94 अपॉन 5.3 प्लस 51.94 इंटू 4 h by 3 सॉरी 2a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू h by 3. सी जी ट्रॅपेझॉइडल होता h by 3 वर ॲक्ट होता. याची व्हॅल्यू येते 1.46 मीटर फ्रॉम बेस ऑफ वॉल. Precondition of earth pressure. Based on the moment of wall, earth pressure can be calculated for rest, active and passive condition. earth pressure चा 3 कंडिशन आहे. एक पहिली आहे रेस्ट, दुसरी आहे ॲक्टिव्ह, तिसरी आहे पॅसिव्ह कंडिशन. तर पहिली पाहू आपण. earth pressure at rest. When there is no movement of a wall, then indicate the condition is at rest condition. In this case, wall remains stationary and there is no deformation of soil mass. For a rest condition, we design the basement wall and bridge abutment. K naught coefficient of earthquake K naught 1 minus sin phi. K naught चा फॉर्म्युला आला आता इथं 1 minus sin phi and K naught चा दुसरा फॉर्म्युला आहे पॉइजन्स रेशो म्यू मायनस 1 मायनस पुन्हा म्यू. दोन फॉर्म्युले K naught चे. बॅकफिल सँड केली जाते. Not at rest, no moment. Where K is the Poisson's ratio of soil and phi is the angle of internal friction of soil. K naught 1 minus sin phi. K naught is equal to 1 minus sin phi. K naught is equal to 1 minus sin phi. K naught is equal to 1 minus mu upon mu minus 1 minus mu. K naught is equal to mu upon 1 minus mu and K is equal to 1 minus sin phi. खत्म काम झालं. दुसरी कंडिशन आहे अर्थ प्रेशर इन अ active condition. When wall move away from the backfill, then it represent
active condition when the wall move away from the backfill पासून जेव्हा वॉल आउटवर्ड मूव होते तेव्हा ॲक्टिव्ह कंडिशन, जागीच राहते तेव्हा टेरेस कंडिशन ॲक्टिव्ह, आणि टुवर्ड द सॉइल मास होते तेव्हा पॅसिव्ह कंडिशन. ड्यू टू द movement of wall away from backfill, soil mass get stretched. Movement of soil is in downward direction. All ordinary retaining wall is designed for active condition. In active condition, Ka, coefficient of earth pressure in an active condition, is, त्याचा फॉर्म्युला 1 minus sin phi upon 1 plus sin phi. Very little movement of a wall is required to cause the active condition. Okay. तीसरी दिल्ली है earth pressure in a passive condition when wall move toward the backfill, then it represented the passive condition. In a passive condition, soil mass get compressed and the soil mass move in upward direction. The larger magnitude and the force is required to move the wall toward the backfill. In a passive condition, coefficient of earth pressure in a passive condition, Kp, the formula 1 plus sin phi upon 1 minus sin phi. Passive condition concerned with the portion of sheet pile below the dredge line. Earth pressure calculation for C5 soil. Active condition in a C5 soil. Active condition in a C5 soil, wall दिली आहे C5 soil साठी. C soil म्हणजे क्ले, oil pressure calculation for C5 soil. Active condition in a C5 soil, wall दिली आहे C minus C5 soil साठी ते C soil म्हणजे clay soil, phi soil म्हणजे sandy soil आणि C5 soil म्हणजे clay sand soil. ओके, त्याचं बेसिक आहे Kp is equal to tan square 45 plus 5 by 2 मग ते होते 1 plus sin phi upon 1 minus sin phi. And coefficient of earth pressure in an active condition is equal to 1 minus sin phi upon 1 plus sin phi. Okay. Now 1 upon Ka
is equal to Kp. Yes, Kp means or vice versa. 1 upon Kp is equal to Ka or K is equal to 1 upon Kp. It is inversely proportional to each other. For plastic equilibrium condition म्हणजे failure condition, gamma 1 म्हणजे stress 1 is equal to vertical direction. Gamma 1 म्हणजे stress in a vertical direction and gamma 3 means stress in a horizontal direction. The stress 1 चा फॉर्म्युला आहे gamma 3 tan square 45 plus 5 by 2 plus 2 into in bracket 2 in मोठा bracket tan 45 plus 5 by 2 रट्टा मारा फॉर्म्युला gamma 1 is equal to gamma 3 tan square 45 plus 5 by 2 2 into tan 45 plus 5 by 2 खत्म. Gamma V is equal to gamma H into Kp plus 2c under root Kp. Gamma V is equal to sigma H into Kp plus 2c under root Kp. Gamma V is equal to sigma H Kp plus 2c under root Kp. Gamma V is equal to stress in horizontal direction into coefficient of earth pressure in a passive condition plus 2c upon 2c into under root coefficient of earth pressure in a passive condition.
sigma v is equal to sigma h kp plus 2c under root kp. Sigma v is equal to sigma h kp plus 2c under root kp. दुसरा फॉर्म्युला दिला सिग्मा h is equal to स्ट्रेस इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन म्हणजे स्मॉल p. कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर k into gamma v minus 2c under root gamma a. k sigma h is equal to k a into gamma v minus 2c under root k. Sigma h is equal to k into gamma v minus 2c under root k. Gamma h is equal to k a into gamma v minus 2c under root k. Gamma h is equal to k a into gamma v minus 2c under root k. Sigma h is equal to k into gamma v minus 2c under root k. Gamma h is equal to k plus gamma v minus 2c under root k. Gamma h is equal to k into gamma v minus 2c under root k. दोन फॉर्म्युले पार्ट झाले का? गॅमा h is equal to gamma v into k a minus 2c under root k and gamma v चा फॉर्म्युला आहे gamma h into k p उलटा मायनस प्लस 2c अंडर रूट kp. को रिलेशन आहे याच्यात सोपीच आहे. गॅमा व्ही जर काढायचा असेल तर लिहायचं गॅमा एच गॅमा व्ही म्हणतो स्ट्रेस व्ही vertical stress is equal to stress in horizontal direction plus kp into kp plus 2c under root kp. Gamma h is equal to sigma v into k. Gamma is for gamma नहीं ना बेस sigma v is equal to gamma into h. Negative reaction tensile nature of earth pressure. Intensity of the photon.
ZC equal to 2C under root gamma under root K depth where pressure is equal to 0. ZC 2C under root gamma under root K. ZC is equal to 2C under root gamma 2C upon gamma into under root K. ZC equal to 2C upon gamma under root K. ZC is equal to 2C upon gamma under root K. Depth of unsaturated excavation without a support. SC is equal to 4C under root 4C upon gamma under root K. SC means the depth of unsupported excavation, that means without a support. SC is HC is equal to SC is equal to 2 into ZC. SC is equal to 2 into ZC. SC is equal to 2 into ZC. ZC is equal to 2 into ZC is equal to 2C upon gamma E into under root K. Gamma into under root K, and SC is equal to 4C upon gamma into under root K. To find step 5, to find the resultant force before crack formation. So 2C under root K negative ZC म्हणजे
To find the resultant force में total RTF total force RTF मुझे area RTF is equal to area of trapezoidal area of trapezoidal and the RTF after the crack formation after the crack formation crack gilly and ZCH minus this H minus ZC. It's not triangle चला between root K H by 3 into H minus ZC by 3 and the area of triangle. Position for super soil. This is area ZC under root KP. नमस्कार दोस्तों, अगर आप अभी तक स्टडी सेशन के साथ जुड़े हैं तो सबसे पहले आप अपने सपनों को सच करने की दिशा में एक कदम बढ़ चुके हैं। कई लोग सोचते हैं कि सिलेक्शन सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों की होती है, लेकिन सच क्या है? सिलेक्शन उनकी होती है जो हर दिन वापस अपनी किताबों के पास लौट आते हैं, चाहे मन करे या ना करे। दोस्तों, कभी भी अपनी जर्नी की तुलना किसी और से मत करना। कोई कोचिंग में पढ़ रहा है, कोई बड़े शहर में पढ़ रहा है, कोई लाइब्रेरी में पढ़ रहा है और तो कोई मेरी तरह अपने घर से, अपने गांव से, अपने छोटे से कमरे में। लेकिन सपनों की कोई सिलेक्शन नहीं होती, सिर्फ मेहनत की होती है, ये याद रखना। मैं चाहता हूँ जब भी तुम थको तो हार मत मानना, बस अपनी स्पीड थोड़ी सी कम कर देना, लेकिन रुकना मत, क्योंकि धीरे चलने वाला इंसान भी मंजिल तक पहुंच ही जाता है अगर वो रुकता नहीं है। अब एक छोटा सा चैलेंज, अगर आप ये ब्रेक सुन रहे हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं हार नहीं मानूंगा, या लिखो डे स्ट्रॉन्ग। मैं चाहता हूँ जब कोई नया स्टूडेंट कमेंट पढ़े तो उसे लगे वो अकेला नहीं है। अब अपनी पानी की बोतल उठाइए, थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए और आँखों को आराम दीजिए और मन में एक बात दोहराइए, मैं रोज बेहतर बन रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, मैं अपना सपना पूरा करूँगा। याद रखिए, रैंक किताबों से नहीं, रोज की आदतों से बनती है। जीत एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन की एक मेहनत एक दिन जरूर जीत बनती है। और आखिर में हम गांव से आए हैं, लेकिन हमारे सपने भारत जितने बड़े हैं। हम सिर्फ खुद नहीं जीतेंगे, सबको साथ लेकर जीतेंगे। चलिए दोस्तों, ब्रेक खत्म हुआ, फोन साइड में रखिए और टाइमर स्टार्ट कीजिए और अगले पोमोडोरो सेशन में अपना 100% दीजिए। लेट्स बिल्ड योर सक्सेस ब्लूप्रिंट टुगेदर विद विश्वराज सक्सेस ब्लूप्रिंट।
For passive condition, pressure intensity at the टॉपचा फॉर्म्युला आहे P top is equal to 2C under root KP, आणि पॅसिव्ह कंडिशन मध्ये P बॉटम म्हणजे प्रेशर इंटेन्सिटी ॲट बॉटम इज इक्वल टू KP इंटू गॅमा इंटू H प्लस 2C अंडर रूट ऑफ KP. तसंच ॲक्टिव्ह कंडिशनमध्ये प्रेशर इंटेन्सिटी ॲट टॉपचा फॉर्म्युला आहे -2C इंटू अंडर रूट KA. तसाच P बॉटमचा फॉर्म्युला आहे KA गॅमा कॅपिटल H मायनस 2C अंडर रूट KA. झेडसी म्हणजे डेप्थ ऑफ टेन्शन क्रॅकचा फॉर्म्युला आहे 2C इन अंडर डेप्थ ऑफ टेन्शन क्रॅकचा फॉर्म्युला म्हणजे झेडसीचा फॉर्म्युला आहे 2C अपॉन गॅमा अंडर रूट KA. झेडसीचा फॉर्म्युला आहे 2C अपॉन गॅमा अंडर रूट KA. झेडसीचा फॉर्म्युला आहे 2C अपॉन अंडर रूट गॅमा इंटू KA. तसाच विदाउट सपोर्ट एक्सकॅव्हेशन अनसपोर्टेड एक्सकॅव्हेशन म्हणजेच कॅपिटल SC इज इक्वल टू 2 इंटू झेडसी म्हणजे झेडसीचा डबल म्हणजेच 4C अंडर रूट गॅमा इंटू KA. SCचा फॉर्म्युला काय झाला मग SC इज इक्वल टू 4C अपॉन गॅमा into under root KA. To find the resultant for before crack, ऍक्टिव्ह कंडिशन मध्ये टोटल रिझल्टंट टोटल फोर्स म्हणजे RTF चा फॉर्म्युला आहे एरिया ऑफ ट्रॅपेझॉइडल. And to find after crack, before crack, after crack झाल्यानंतर RTF चा फॉर्म्युला आहे RTF is equal to area of triangle in passive condition for C5 soil. सरळ ट्रॅपेझॉइडलचा फॉर्म्युला आहे P top is equal to passive condition साठी P top P is equal to 2C under root KP and P bottom आहे KP gamma capital H plus 2C under root KP. Now आता comparison between active and passive earth pressure. Active earth pressure, wall moves away from the backfill, बरोबर आहे. Due to the movement of a wall, shear strength of soil get reduce or decrease, बरोबर आहे. The soil mass gets stretched, बरोबर आहे. Little force is required to cause active condition, बरोबर आहे. In a active condition there may be a changes cracking at the top due to the tension. बरं, the coefficient of active earth pressure चा फॉर्म्युला आहे K is equal to 1 minus sin phi upon 1 plus sin phi. Major stress is vertical stress due to the cohesion of soil. C, active earth pressure decrease. Passive earth pressure, wall moves toward the backfill due to the movement of a wall, shear strength increases, बरोबर आहे. Entire soil mass gets compacted. Very large force is required for causing the passive condition. There is no changes of tension crack at the top. Coefficient of passive earth pressure चा फॉर्म्युला आहे KP is equal to 1 plus sin phi upon 1 minus sin phi.
Major stress is a horizontal stress due to the cohesion of soil C. The passive earth pressure increases due to the cohesion of soil C. In active condition, earth pressure is decreases. Note active earth pressure Pa is equal to Ka gamma into H minus 2C upon Ka. Passive earth pressure Pp is equal to Ka into gamma H plus 2C upon 2C into under root Kp. For pure clay, phi is equal to 0, Ka is equal to 1 minus sin phi upon 1 plus sin phi, the 1 minus 0 upon 1 plus 0, Ka is equal to 1, Ka and Kp, Ka is 0 for pure clay is equal to 1. So active earth pressure Pa is equal to gamma H minus 2C and passive earth pressure Pp when phi is equal to 0, Pp is equal to gamma H plus 2C. आता न्यूमेरिकल आहे त्याच्या आपल्याला Chapter number 6 Shear Strength L2 Meaning of Shear Strength. Shear strength is a maximum value of a stress which soil can resist without any failure. Shear strength is a maximum value of a stress that can be resisted by a soil without any failure. Shear stress is denoted by tau and the shear strength is denoted by tau f or tau max or capital S. Shear strength of soil is governed by two important parameters, that is cohesion and angle of internal friction. Cohesion is denoted by small c and angle of internal friction is denoted by phi. As per the direct shear test, shear strength is equal to C plus sigma tan phi. As per the direct shear test, shear strength of a soil is equal to cohesion plus sigma tan phi. For pure clay, phi is equal to 0 and therefore shear strength is equal to C. And pure sand is, if pure sand, cohesion C is equal to 0 and S is equal to sigma tan phi. एक लक्षात ठेवा, शियर स्ट्रेंथचा फॉर्म्युला आहे म्हणजे टाऊ एफ किंवा टाऊ मॅक्स किंवा कॅपिटल एस इज इक्वल टू
C plus sigma tan phi. For pure clay soil, phi is equal to 0. Therefore, shear strength tau f किंवा tau max किंवा S is equal to C. And pure sand जर असन तर C is equal to 0 होते. तर shear strength ची व्हॅल्यू होते S म्हणजे सिग्मा टॅन फाय. ठीक आहे. मीनिंग ऑफ कोहेजन. Cohesion is the property which governs bonding between the various soil particles, and it helps to provide resistance against sliding of soil mass. The bonding between the various soil particles which resists the sliding of soil mass. When graph between the shear stress and normal stress is drawn, y-intercept represent cohesion property is drawn. Y-intercept represent the cohesion property. The meaning of angle of internal friction phi. It is the degree of friction in between various particles of soil, and it formed due to the interlocking. It is the degree of friction. It is the degree of friction in between various particles of soil, and it formed due to the interlocking. For sandy soil, shear strength is slightly depend upon the phi only. Only due to the smooth texture of clay particle, there is no interlocking of a grain, and hence the value of phi for clay is a 0. When graph between normal and shear stress is drawn, then slope of a line represent phi. Then next topic is liquefaction. Liquefaction means liquefaction is the process in which the soil acts as a liquid and shear strength of soil drop down to the 0. The process occurs due to the vibration in a soil, and this vibration form during the earthquake, pile driving, and the blasting. When pore water pressure in a soil mass is increased and become equal to the total stress, then the value of effective stress becomes 0, and hence the shear strength drop down to the 0 in a sandy soil. In clay soil, liquefaction cannot occur, as even if the pore water pressure become equal to the total stress, then also shear strength is non-zero due to the presence of a cohesion. This phenomenon occurs in the case of saturated sand, fine to medium sand. This phenomenon cannot occur in the case of gravel and porous sand. When pore water pressure in the soil mass is increased and become equal to the total stress, then the value of
effective stress becomes zero and hence shear strength drop down to zero in a sandy soil. In type of shear stress, टाइप ऑफ शिअर टेस्ट लॅब टेस्ट असते, काही फील्ड टेस्ट असते. लॅब टेस्टमध्ये डायरेक्ट शिअर स्ट्रेस येते, व्हेन शिअर टेस्ट येते, ट्राय ॲक्सियल कॉम्प्रेशन टेस्ट येते, अनकन्फाईन्ड कॉम्प्रेशन टेस्ट येते, रिंग शिअर टेस्ट येते आणि टॉर्शन बॉक्स शिअर टेस्ट येते. फील्ड टेस्टमध्ये शिअर स्ट्रेंथ कशी काढतात तर कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, त्याला आपण CPT म्हणतो. SPT म्हणजे स्टँडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट अँड फील्ड वेन शिअर टेस्ट. अशा फील्डच्या 3 आहे, CPT, SPT अँड VST, वेन शिअर टेस्ट. लॅब टेस्ट कोणत्या? डायरेक्ट शिअर टेस्ट, वेन शिअर टेस्ट, ट्राय ॲक्सियल कॉम्प्रेशन टेस्ट, युनी ॲक्सियल युनी अनकन्फाइंड कॉम्प्रेशन टेस्ट, रिंग शिअर टेस्ट अँड टॉर्शन बॉक्स शिअर टेस्ट. टॉर्शन बॉक्स शिअर टेस्ट, ऑपरेशन टेस्ट, ॲक्सियल कॉम्प्रेशन टेस्ट, शिअर टेस्ट, डायरेक्ट शिअर टेस्ट. Direct shear test, DST. The purpose of direct shear test is to calculate the shear stress parameter, that means coherency and angle of internal friction phi. For conducting this test, a box of dimension 60 by 60 by 25 is used. The box is divided into two equal parts of 12.5 mm depth. It is one of the oldest and simple tests to find out the shear strength of soil. Failure plane passes through the mid depth of soil sample and the direction is horizontal. In this test, the water is not allowed to escape and hence the water content of soil remain constant. The soil sample is placed in a shear box and a box is mounted on a roller. Normal load applied in a vertical direction and the shear load is applied in a horizontal direction and corresponding phi and tau is calculated by taking the various combination of tau and phi. Tau and stress sigma graph is plotted and by joining the point we obtain the failure envelope or a failure line. The y-interordinate of a graph represent a cohesion and the slope of failure envelope represent the angle of internal friction. The equation of shear strength or stress is tau is equal to C plus sigma tan phi. Limitation of direct shear test: failure plane is predefined and which may not be the weakest plane for that a particular soil. Failure plane is predefined, बरोबर, and which may not be weakest plane for that a particular soil. There is no arrangement to measure a pore water pressure in a direct shear test. The test is applicable for
फाईन टू medium sand only. टाऊ असतो y डायरेक्शनवर, द स्ट्रेस असतो सिग्मावर. जसं टाऊ वाढतो. सी म्हणजे कोहेजन and phi is angle of internal friction. Okay. When the numerical is given, the two combination of sigma and tau is given, then form a two equation and solve then by using simultaneous equation for calculating the coherency and angle of internal friction phi. दूसरी टेस्ट आहे वेन शियर टेस्ट VST. This test is used for very soft and sensitive soil. Soft and sensitive, this test is carried out on both field as well as lab. Field plus lab वर केली जाते. The size of vein used for field test is more than the size of used for lab test. बरोबर. VST is a type of undrained test. Undrained test. This test cannot be used for soil which is difficult to cut and by vein such as gravel and sand. Not used for gravel and sand. The height of vein is a twice of its diameter. Height of vein is equal to twice of its diameter of vein. For conducting this test, vein is punched into the soil. Whose diameter and the height is already known, and the value of a torque which is required by a soil to cause a failure is recorded using the following expression. Cu is calculated for both phases in a soil. T म्हणजे टॉर्क, pi d square into Cu into h by 2 plus t by 6 for one phase in a soil.
for one phase in a soil, torque capital T is equal to pi into capital D square into cu in bracket capital H by 2 plus D by 12. For clay, shear strength is equal to the cohesion of soil. For clay, shear strength S is equal to the cohesion of soil C. Every soil resource strength is equal to the cohesion of तिसरी टेस्ट आहे शिअर स्ट्रेंथ काढासाठी अनकन्फाईंड कॉम्प्रेशन टेस्ट. त्याला म्हणतो आपण UCT, अनकन्फाईंड कॉम्प्रेशन टेस्ट. दिस टेस्ट इज अ special case of a triaxial compression test with a confining pressure sigma c is equal to 0.
This test cannot be measured for water pressure. Not measure PWP. Hence, the categorized as a type of untrained test. This test used for the type of soil which can stand for a long period without any lateral support during the testing. Okay, the clay is only material which can stand without any confinement, and hence this test is specially used for clay soil. Used for clay soil, no confining pressure is applied on a sample, and a sample is placed between a two plate without any rubber rib membrane. This test cannot be used for not used for gravel and sandy soil, not used for sandy soil. In UCT, a minor principal stress is 0. In the case of UCT, in the case of unknown stress is present in a axial direction only, which represent a major only it represented the major stress, and the value of a minor stress is 0, and more circle for this stress is given as tau 50 गिट्ट्या कुठले वर आणले की कोणत्या गिट्ट्या हे कायले वापस करते दुसऱ्या आणखी किती वाल्या पाहिजे तुम्ही त्या लागतेच ना मग कधी ना कधी. त्याला येते का जरी नाही राहत नाही तर काय, त्यात आहेच किती 2-3, बाकीच्या तर काढून डबल लावला त्यानं, काही बेकारच आहे. पैसे कुठं वाचवले पाहिजेत हे तर पाच जा. पस्तीस
35 नंबर, 35। हाँ, clay contains some amount of sandy soil. Y is equal to 0. Sorry. Then U is equal to sit and 45 plus 5 by 2 for pure clay soil. Phi is equal to 0. In unconfined compression test for pure clay, phi is equal to 0. Therefore, unconfined compression strength UCS is equal to 2C, or use the frame formula cohesion C is equal to UCS by 2. If clay contains some amount of sandy soil, then unconfined compression strength is equal to 2C tan 45 plus 5 by 2. Next topic is sensitivity. It is the ratio of strength of a soil in a undisturbed condition to the strength of soil in a disturbed condition, means remolded condition. Sensitivity is equal to the strength of soil in a disturbed condition to the strength of soil. Sensitivity, it is the ratio of strength of soil in a undisturbed condition to the disturbed condition. Means sensitivity's formula is tau v upon tau r, tau u upon tau r. Sensitivity is equal to shear strength, means strength of soil in an undisturbed sample to the strength of soil in a disturbed sample or a remolded sample. तो r वापरतो आपण, म्हणजे C undisturbed upon C disturb or remold आराम, और UC चे 3 फार्मूला आहे. सेन्सिटिव्हिटी फार्मूला आहे. पहिला फार्मूला टाउ यू अपॉन टाउ आर, दूसरा फार्मूला सी यू अपॉन सी आर, and तीसरा फार्मूला UCS U upon UCS R. Normally the strength of soil is decreased due to the disturbance, but in some cases soil which is contain crack undergoes in the process of rearrangement of particle and the densification. Due to this, strength of soil increases, and in such a value of sensitivity is less than 1. For insensitive soil, sensitivity is equal to 1. If the value of sensitivity is between 2 to 4, is less sensitive soil, 4 to 8 sensitive, 8 to 16 extra sensitive.
Scam pour water pressure parameter. Scam pour pressure parameter to measure the pore water pressure. Theoretical approach is proposed by Skempton because it is difficult to measure pore water pressure by a practical approach. Skempton proposed two parameters, normally A and B, for measurement of pressure in each stage. For confining stage, parameter B is used, and change in a pore water pressure is confining stage. Confining stage is given by delta U3 is equal to B delta sigma 3. Range of parameter B is 0 to 1 and B depend upon the degree of saturation. For dry soil, B is equal to 0. For fully saturated soil, B is equal to 1. For deviator stage parameter, A and B is used, and the change in pore water pressure is given by delta UD is equal to A into B into delta sigma D. Total change in pore water pressure is given by delta U is equal to delta U3 plus delta UD. Triaxial compression test. For following figure shows the experimental arrangement of a triaxial compression test. पोरस स्टोन त्याच्या सॉइल भरल्यावरून पोरस स्टोन दिला वरून एक नळिया दिल्या भावाला फॉर वॉटर प्रेशर आहे बरोबर नंबर भरला हे फ्लक्स नंबर आहे तो अप्लाय द सेल्फ प्रेशर ओके त्या वॉलमधून फॉर वॉटर बाहेर निघते कोणता वॉल आहे त्या सेल एरिया वॉल सेल एरिया मेजर the triaxial test is conducted to calculate the buoyancy and angle of internal friction phi value for a drain test or undrained test condition both. This test is carried out two stages in which drainage wall may kept closed or open depending upon the requirement of test. When water is allowed to escape from a sample, then the volume of a specimen decreases.
When water is allowed to escape during the test by keeping the valve open, then obtain the effective shear strength parameter, that is C dash and pi dash. If valve is kept closed during test, then we get a total shear strength parameter, that is Cu and pi u. The shape of काय हा आता हे त्याच्यात जाईन काय म्हणा, हे वाले आणायला काही नाही होत. If the value is kept close during the test, then we get a total shear strength parameter, that is Cu and Iu. The slope of specimen is the shape of specimen is cylindrical and it is prepared from saturated soil mass, and this specimen is enclosed inside the rubber membrane film. The height of specimen is twice the diameter. This test is widely used because it is possible to obtain a result of drain and undrained test. The triaxial compression test failure plane is not predefined. Here we can measure decrease in a volume of soil specimen by measuring the amount of water escape. The test stimulate behavior of soil which is present in a field condition. In triaxial compression test, the confining stress or pressure is applied in all the direction on a specimen, whereas the deviator stress is applied in an axial direction only. This test is conducted in the following two stages. First stage is confining pressure stage and दूसरी deviator stage. In confining pressure stage, this stage is also called as a cell pressure stage or consolidation stage. In this stage, we apply the confining pressure at the start of the test from all the direction. Application of confining pressure is stopped when complete water is removed due to the pressure application. When drain valve is closed and the water is not allowed to escape, then it is referred as unconsolidated condition. Whereas if valve is open and water is allowed to escape, then it called consolidated condition. Consolidation means removal of water from soil due to the confining pressure. Stage 2 deviator stage. The deviator stage is also called as the axial stage or a shearing stage. Keeping the confining pressure constant, an additional stress of magnitude sigma d is applied in a vertical direction in a stage 2.
When wall is kept closed during the test, then it is referred as untrained stage, whereas the wall is kept open, then is referred as a trained test. The following expression is used to correlate sigma 1 and sigma 3 at a failure condition. Sigma 1 is equal to sigma 3 tan square in bracket 45u plus 5 by 2 plus 2c tan 45u plus 5 by 2 for c5 soil. Here the tan square 45 plus 5 by 2 is called as a flow value, means NP, that is n5 is equal to the tan square 45 plus 5 by 2. Sigma 1 is equal to the sigma 3 nq plus 2c under root of nq. Under root come
दोस्तों, अगर आपने आज मेरे साथ पढ़ाई की है तो दिल से आपका धन्यवाद। याद रखिए, हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश एक दिन आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देंगे। अगर आज की वीडियो ने आपको फोकस बनाए रखने में मदद की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप भी अपने सपनों के लिए रोज़ मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं तो ब्लूप्रिंट को कर दीजिए। इस चैनल पर आपको कोई दिखावा नहीं मिलेगा, सिर्फ एक रियल स्टूडेंट की जर्नी मिलेगी। मैं जो सीखूंगा, मैं जो गलतियां करूंगा, मैं जो स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करेंगी वो मैं ईमानदारी के साथ आपके साथ साझा करूंगा। हम एक कम्युनिटी बनाएंगे जहां हम एक दूसरे को नीचे नहीं ऊपर उठाएंगे। याद रखिए, स्मार्ट वर्क दिशा देता है, हार्ड वर्क मंजिल तक पहुंचाता है और कंसिस्टेंसी सपनों को हकीकत बनाती है। हम गांव से आए हैं लेकिन सफलता की मंजिल तक सबको साथ लेकर जाएंगे। मैं विश्वराज, मिलते हैं अगली सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सक्सेस ब्लूप्रिंट पर काम करते रहिए। जय हिंद।